Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at their places. Today's topic is memory and storage. Objectives of learning: to understand about memory and types of memory, to know about memory measuring units. We have read that the data is entered into the computer and output is achieved then. But have you wondered where is the entered data stored? The data is stored inside the computer in different storage areas known as the memory of computer. This memory may be temporary or permanent. The computer's memory is divided into two categories, namely internal primary memory and external secondary memory. तो हमने पीछे के चैप्टर्स में पढ़ा है बहुत सारा इनपुट डेटा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, लेकिन हैव यू एवर वंडर्ड कि ये जाता कहाँ है? कंप्यूटर में एक डेटा होता है जो कि एक मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है. दो टाइप की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी. Memory units. Computer can only understand binary language where 1 represents on and 0 represents off. These 0 and 1 are called the binary digits or bits. It is the smallest unit of a computer's memory. Each character is represented by a set of 8 binary digits. This set of 8 bits is called a byte. So, 1 byte is used to represent 1 character of data. 1 byte is equals to 8 bits. To represent a large amount of data in memory, higher data storage units are used like KB, MB, GB, etc. But all these units are formed with the set of bytes as listed below. 1 kilobyte KB is equals to 1024 bytes. 1 megabyte MB is equals to 1024 KB. 1 gigabyte GB is equals to 1024 MB. 1 terabyte TB is equals to 1024 GB. 1 petabyte PB is equals to 1024 TB. 1 exabyte EB is equals to 1024 PB. 1 zettabyte ZB is equals to 1024 EB. 1 yottabyte YB is equals to 1024 ZB. तो आपके जो मेमोरी यूनिट्स होते हैं इसमें ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जहाँ पे 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन. ये आपकी बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं, बाइनरी यूनिट्स होती हैं जिन्हें बिट्स कहा जाता है, और बिट्स बाद में जाके आपकी बना देती हैं बाइट्स. तो आपकी अलग अलग मेमोरी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि केबी होता है आपका, किलोबाइट, मेगाबाइट, एमबी, गीगाबाइट, जीबी, टेराबाइट, टीबी. उसके अलावा भी आपके बहुत सारे अलग अलग बाइट्स होते हैं जिसके फॉर्म में आपकी मेमोरी स्टोर करी जाती है. डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा आपकी वाइड वैरायटी या वाइड रेंज ऑफ मेमोरी है, कितना स्टोरेज कैपेसिटी है. Primary memory. Primary memory is known as the main memory or internal memory where data and instructions are stored. It is present on the motherboard and is further divided into two parts: RAM, random access memory, ROM, read only memory. तो प्राइमरी मेमोरी होता है आपका इंटरनल मेमोरी का पार्ट. ये आपके कीबोर्ड या मदरबोर्ड में ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है. दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, एक है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक है रोम, रीड ओनली मेमोरी. RAM. RAM is a temporary memory in which programs, applications and data are stored in a random manner inside the CPU. Hence, it is called as random access memory. In RAM, the data remains for the time till the computer is working, switched on. If we switch off the computer system, the data gets deleted from the memory. Thus, it is also known as volatile memory. RAM is the memory where we can both read and write information, thus providing it a name of read write मेमोरी. तो आपका पहला होता है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसमें आपका कोई भी डेटा सेव्ड नहीं होता है, रैंडमली इसको रीड करा जाता है, इसीलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है. इसमें आप कोई भी चीज लिख सकते हैं या फिर रीड आउट कर सकते हैं. ये तभी तक आपका फंक्शन करता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है. जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, रैम की जो मेमोरी होती है. इसीलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है. रोम.
ROM is a memory that cannot be changed by a program or user. It is also known as read-only memory, as it is a memory from which information can usually be read. It retains its memory even after the computer is turned off, thus known as non-volatile memory. For example, ROM stores the instructions for the computer to start up when it is turned on अगेन. तो आपका जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है. ये आपके जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिलीट नहीं होती है अगर आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करेंगे तो भी. फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं तो वो बिल्कुल उसी मैनर में ऑन हो जाता है. ये पॉसिबल होता है रोम की वजह से. एक्टिविटी. Gaurav wants to install an additional RAM chip on his computer. Tick it from amongst the memory devices shown below. तो आपके सामने 3 डिवाइसेस हैं. जो गौरव है उसको एक मेमोरी चिप लगानी है. आपको बताना है कि मेमोरी चिप इनमें से कौन सी है. Secondary memory. This type of memory is referred to as external memory, auxiliary storage, and secondary storage. It is a storage medium that holds information for future retrieval. The secondary storage is typically slower and is of higher capacity than primary storage. It is accessed much faster than secondary storage because of the price and size limitations. Some secondary storage devices are given below. तो आपका जो सेकेंडरी मेमोरी होता है इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है. इसमें आपकी सारी के सारी इंफॉर्मेशन और डेटा स्टोर्ड रहता है और लंबे टाइम के लिए आपके कंप्यूटर में फीड रहता है. इसी वजह से इसको सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है. इसकी कैपेसिटी प्राइमरी स्टोरेज से काफी ज्यादा होती है. हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क आपका एक एक्सटर्नल मेमोरी का ही पार्ट है, सेकेंडरी मेमोरी का. The computer's hard drive was introduced in year 1956 for the first time. It is the largest storage location on the computer system. Hard drives are mechanical devices which store data magnetically. They are considered primary permanent storage. The capacity of hard drives typically ranges from about 40 GB to 400 GB or higher up to 2 TB. Hard disk drives are read-write. The main internal backing store is the computer's hard disk. Nowadays, we also get external hard drives in the market to take backup of the data and store for future use, and it is easy to carry it anywhere while traveling. तो आपका जो हार्ड ड्राइव्स कंप्यूटर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो 1956 में पहली बार यूज करे गए थे, इन्वेंट करे गए थे. ये आपका सबसे बड़ा पार्ट होता है. इसी में आपका सारा का सारा डेटा स्टोर्ड रहता है. 400 MB तक या फिर उससे भी ज्यादा 2 TB तक भी आपकी हार्ड डिस्क होती हैं. इसके अलावा आज की डेट में आप देखेंगे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आपको मार्केट में मिलती है जो कि आप इजीली कहीं पर भी कैप्चर कर सकते हैं, ट्रैवल करके लेके जा सकते हैं. बहुत ही छोटी सी कॉम्पैक्ट सी होती है जिसमें आप एडिशनल डेटा भी अपना स्टोर कर सकते हैं. CD. Compact disc or CD consists of tracks and sectors to store data on the disk. They store up to 700 MB of data. CDs can be used for multimedia applications such as encyclopedias and can store pictures, sounds and video clips or anything else that will fit. It is divided into 2 types. CDR, compact disk recordable. The user can write data to the CD once or fill it over time using CDR multi-session writing to the same disk or separate occasions. CDRW, compact disk rewritable. The CD can be written and rewritten too. Unlike multi-session disks, existing data can be overwritten by erasing old data from the CD. फिर आपके CDs यानी कि compact disk आते हैं. इसमें आप कोई भी encyclopedias, movies आपकी होती हैं, videos होती हैं, उनको सेव कर सकते हैं. अप टू 700 MB की इनकी स्टोरेज होती है. 2 टाइप की आपकी सीडीज होती है. पहला आपका CDR है यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल. इसमें आपकी जो भी चीजें रिकॉर्डेड रहती हैं इसको आप दोबारा से देख सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते. जो दूसरा आपका सीडी का टाइप है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल. इसमें आपका जो भी डेटा स्टोर्ड है इस टाइप की सीडी में आप उसको डिलीट करके दोबारा से दूसरा डेटा भी उसमें फीड कर सकते हैं. DVD. DVD or digital versatile disk are the same as compact disk but hold much more data than CD.
A single-sided DVD can hold up to 4.7 GB of data. The DVD is available in two different types as given on next page. DVD-R, meaning DVD recordable. The user can write data on the DVD once or fill it over time using multi-session. DVD-RW, meaning DVD rewritable. The DVD can be written and rewritten too. Unlike multi-session discs, existing data can be overwritten. तो आपके जो DVDs होते हैं वो versatile होते हैं, CDs की तरह ही होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि इसमें CD से भी ज़्यादा डेटा कैप्चर हो सकता है. CDs में 700 MB तक हो सकता है, लेकिन DVDs में 4.7 GB तक का डेटा एक बार में स्टोर हो सकता है. इसके भी दो टाइप होते हैं, DVD-R यानी कि DVD रिकॉर्डेबल. इसमें आप कोई भी डेटा मल्टी सेशंस की तरह एक एक करके इसको फिल इन कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं. दूसरा है आपका DVD-RW यानी कि रीराइटेबल. इसमें आपका जो भी डेटा है इसको आप रीराइट भी कर सकते हैं और ओवरराइट भी कर सकते हैं. Do you know? To read and write data on the CD and DVD, you need a CD-DVD drive attached to your computer system or laptop. You can even purchase portable CD-DVD drive. तो CD और DVD को रीड करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए आपके कंप्यूटर में एक DVD या फिर CD ड्राइव होनी चाहिए. इनकेस अगर नहीं है तो इसको आप खरीद भी सकते हैं. पोर्टेबल CD और DVD ड्राइव्स भी अवेलेबल होती हैं. USB flash drive. A USB flash drive or a pen drive is a memory stick which is a pen top sized USB device. It can be used to take backup of the files by inserting a pen drive into the USB port, which nowadays by default is attached to every tablet, laptop, desktop, etc. It is recognized by any computer as a removable drive. They typically come in sizes from 512 MB to 32 GB upwards. It can hold large quantities of data. It is an extremely portable device and durable too. So the user can take them wherever they go. फिर आपका आता है USB फ्लैश ड्राइव, जो कि आपकी पेन ड्राइव्स होती हैं, पेन के ढक्कन के जितनी ये छोटी होती हैं. आप इसको कभी भी इंसर्ट कर सकते हैं, बैकअप्स करने के लिए यूज होती हैं. ये 34 GB तक आपकी अवेलेबल होती हैं और बहुत ही ईजी होती हैं. आसानी से आप इसको जो आपके जैक्स कंप्यूटर, लैपटॉप्स या डेस्कटॉप में प्रेजेंट होते हैं उस जैक में आप एंटर करिए, आपको सारा का सारा फाइल आपको दिख जाएगा. जैसे ही आप उसको हटाएंगे वो सारी की सारी फाइल्स हट जाएंगी. जिस भी कंप्यूटर में आप इसको इंसर्ट करेंगे उसमें आपको ये सारी की सारी चीजें मेंशन हो जाएंगी. Critical thinking. Sachin wants to copy 3 movies on a disk so as to see them at his place. Which type of disk would be the most suitable for this purpose? तो सचिन को अपनी एक 3 मूवीज एक ही CD में स्टोर करनी है. तो जिस डिस्क में उसको स्टोर करनी है, अभी हमने बहुत सारी टाइप की डिस्क पढ़ी हैं, आपको बताना है कि कौन सी सबसे ज्यादा सूटेबल होगी. Blu-ray disc. Blu-ray disc is a new type of optical storage device designed to supersede the DVD format. The plastic disc is the same size as DVDs and ODs. The name Blu-ray disc refers to the blue laser used to read the disc, which allows information to be stored to a greater density than is possible with wavelength and red laser used for DVDs. It can store up to 25 GB of data, but to read and use the data, you require a Blu-ray डिस्क. तो अब आपके DVDs और ODs को रिप्लेस करने के लिए ब्लू रे डिस्क आ गए हैं. इसका कलर भी ब्लू ही होता है. इसमें ज्यादा से ज्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं और ये इनको रिप्लेस करने के लिए बनाई गई हैं. डू यू नो ब्लू रे डिस्क हैज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लू वायलेट लेजर विच इज यूज्ड टू रीड एंड राइट डेटा ऑन दिस टाइप ऑफ डिस्क. तो आपका जो ब्लू रे डिस्क है वो ब्लू वायलेट लेजर से डिराइव करा गया है. Memory card. A memory card is a storage medium for portable cameras, mobile phones and music players in a form that can easily be removed for access by a computer. These devices transfer images and music files into computer by using memory card reader that can be connected to a computer through a USB, Universal Serial Bus केबल. फिर आपके मेमोरी कार्ड्स छोटी छोटी चिप्स होती हैं, आपके मोबाइल फोन्स में, कैमराज में यूज करी जाती हैं. इजीली इनको एक्सेस करा जा सकता है, बहुत आसानी से आप इसको ट्रैवल कर सकते हैं लेकर. जो आपके USBs होते हैं उनके साथ कनेक्ट करके, या फिर आपके पास एक मेमोरी कार्ड रीडर होना चाहिए, तभी आप इनके अंदर जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर पाएंगे. Let's revise. Memory stores data and instructions for future use using a variety of storage devices. There are 2 types of storage devices,
primary storage devices and secondary storage devices. Primary storage devices are RAM and ROM. Secondary storage devices are CD, DVD, USB drive, memory card, etc. Hard disk is fixed permanently inside the CPU and contains all the data. तो आपके कंप्यूटर में जो मेमोरीज सेव करी जाती हैं उसकी अलग अलग टाइप्स होते हैं. एक्सटर्नल मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है. इंटरनल मेमोरी में आपका रोम और रैम आ जाता है. रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी. जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसमें आपके डीवीडीज, सीडी प्लेयर्स, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी चीजें आती हैं. और जो आपकी दूसरे टाइप की हार्ड डिस्क होती है वो कंप्यूटर्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहती है आपके सारे बैकअप्स को रखने के लिए. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है.